We are just doing the Euler-Totti function and Wilson theorem and Fermat. Now, Fermat is obviously now you can do all the questions not through Fermat. We can go with the Totti function. Right. So based on that facts, we are going to do questions, right? So first one on this, you all remember now? First question. For what value of n, phi of 2n is equal to phi of n? For what value of n, phi of 2n must be equals to pn? Very good. Save. Can I start this? Yes, Krisip, how you are thinking on this? सर सबसे पहले वो जो ऑयलर टोशन फंक्शन है वो एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, तो वो मल्टीप्लिकेशन का जो फंक्शन है वो हम तभी यूज कर सकते हैं जब जो 2 और n है वो कोप्राइम होगा, तभी उसे स्प्लिट कर सकते हैं phi 2 into phi n में, और जब हम लोग उसे स्प्लिट कर देंगे तो phi 2 1 हो जाएगा, तो phi n आएगा. Right. So first thing we have to obviously 2 and n ka GCD will be 1. So I can write down this as P of 2 into P of n is equal to n, right? So if you'll see, this is true only if n is odd. Then we can cancel out both this. So phi of 2 is equal to 1. This is a true statement, right? Means, right, for n is odd, we are getting all the values, right? Second, P of 2n is equals to n when 2n less than equal to 25, right? Find all the possible values of n. These are the simple one, right? What are the values of n are possible in this case? Right? Just we have done this. This is very good. Utkarsh, very good.
Okay. All out. Right? Next. सर वो 3, 5, 7 and 11 है, मैंने गलती से 1 लिखा है. ठीक है, I understand. Now, what? 3 to the power 56 mod 7. Find the remainder of this. सर आप सर Okay, good, 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 good. Very good, very good. Direct questions. Sirs. Right? So 3 to the power mod 7, right? So phi of 7. Okay, everyone is getting this now, right? So obviously we remember all the concepts, 3 right? to the power 6 is 1 mod 7, so 3 to the power 54 is 1 mod 7 and 3 square is 2 mod 7, so it's 2. Very good. Prove that a to the power 13 congruence to a mod 2730. So beautiful arrangement, right? And the simple question. Done. Send the solution. सर एक मिनट. ओके, जस्ट वेट ना, अभी चैट में हम लोग कर लेंगे.
So good arrangement, right? ये concept के लिए भी this is very good question. So done. Very good. Because So done. Sir, I've written in which way I have done it. On that I have one doubt. wait, wait. We have to discuss this. Okay, let's see. Yes. Utkarsh done, beta? Okay, start करें. Who'll explain first? Sir, I would, sir, can I? Yes, please. Okay, so basically what I did is that first of all, a to the power 13, if we take that 8, we have to prove that a to the power 12 is 1 more 2730. Mm-hmm. So that means I took 5 totient of 2730 and I got that it's 576. And then then I made it a square root and then gone down to 12. Then how we can say कि always this will be true? Sir, because 576, because well, 576 can be like written as 12 in, like 24 into 24, which is 12 into 24 into 2 or something. Yeah, 12 into 24 into 2. So that means since 24 is a multiple of 3, it would always go down to 1. और कोई देखता हूँ फिर से. What is your working? Yes, sir. So 2730 equals 13 into 7 into 5 into 3 into 2. Mm-hmm. So a to the power 12 is congruent to 1 mod 13. A to the power 6 is congruent to 1 mod 7. A to the power 4 is congruent to 1 mod 5. Very A good. square is congruent to 1 mod 3. And a to the power 13 is congruent to a mod 2 because a to the power 13 and a have the same parity. Now, for 13, 7, and 5, and 3, for all of their mods, we can convert everything to a to the power 12 is congruent to 1, and then we can multiply a. So a to the power 13 is congruent to a. Then we can combine all the modules. Okay. That's the perfect way to going this. This is very good key when we are saying 52730 is nothing but this is 576, right? This will be 1 into 2 into 4 into 6 into 12, right? So 576, right? From this, I know that we can say a to the power 576 congruence to, right? It's not going with 1 mod 2730. But from this, we can't say anything, right? So, like, we can't say for every number it's divisible. So we have to. Yeah, because like some places there are 2 and 4 or something. So like it could be -1 also. So we have to divide this into two parts. If first part, when a is a multiple of all the numbers 2, 3, 5, 7, and 13. So this will be always divisible. So if this is 0, this must be 0. So 0 is equal to 0. That is not the case, right? So only I have to prove when this is co-prime with all the number 2, 3, 5, 7, and 13, right? And we know that 5 of 13 is 12. So a to the power 12 congruence to 1 mod 13, right? And a to the power 7, right? When the phi of 7 is 6. So a to the power 6 congruence to 1 mod 7. From both the parity, we can say, right, a to the power 7 congruence to a mod 7 and a to the power 13 congruence to a mod 13, right? So from this two, I can say a to the power 13 is equals to a plus 7 of t. Some number will be there, right? Or a to the power
13, right, is either A plus 13. Both the cases are there. So 7, oh, sorry, S, both are number. 7T is equal to 13 of S. So 13 must divide T or 7 must divide S. मतलब both are multiple of 7 and 13. Getting my point? Well, CRT. We are doing CRT in different way. Chinese remainder theorem, right? So every factors are coming into this. So I can say a to the power 13. Similarly, for 5, I can say a to the power a plus 5 of r, right? So I can say a to the power 13 is a plus 91n. And this is the multiple of all the number. So a to the power 13 congruence to a mod of 455. 455 multiple of all three. And similarly, I can go up to the numbers. So the same can be said for 5 and 3, right? A to the power 4 is 1 mod 5 and a square is That's 1 the mod reason 3. I can say for every number, this will be divisible. Either this is a multiple of 13 or not. Is this okay? Right? Is this okay? Yes, sir. Right? So a few of the conditions on this, right? But obviously, right, you know all this thing. So इसमें तो दिक्कत नहीं जानी चाहिए. The second, जिसपे हम लोग ने थोड़े से कम क्वेश्चन किए थे, थोड़ी कंजूसी हो गई थी. That was Wilson theorem. P याद है ना? Odd prime. Then P minus 1 factorial congruence to minus 1 mod P. We have already proved this, right? The best question on this is, prove that P cube divides 2P CP minus 2. This is one, yeah, ये P square से भी पहले, सबसे पहले ये P से होता है divisible by P. Then you have to go for P square. Then you have to go for P cube. So we can start with that only, na? First, you have to start with this will be divisible by P, then you have to go for P square, then you have to go for P cube. This is the last question. So start with P, then go for P square, then we have to come for P cube, right? 3 questions are there. We have to start from the basic P. Take your time.
only we just you have to start with p and p square only, right? pq will do later on. हाँ, थोड़ा सोचने के बाद में, पहले ये दोनों से. You all know the meaning of 2pcp, right? 2p choose p. Yes, sir. Yes, sir. मैं स्टार्ट करूं क्या? कुछ हिंट दूं? पहले पी स्क्वायर तक करके देखिए. मीन वर्किंग है 2pcp. इसके व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 2pcp? 2p factorial divided by p factorial into p factorial. Right. That would be equal to 2p minus p minus 1, and it will go to 2p minus 1 into 2p. Okay. 2p minus 1 का factorial upon p factorial p minus 1 का factorial, something like this, right? So it is possible to prove something from this. इससे क्या कुछ प्रूफ हो जाएगा अपने पास? यहां से तो नहीं दिख रहा. नहीं. So like अगर p minus 1 को कर सकते हैं तो कुछ p multiplied by कुछ a to z आ सकता है. 2n cn का मतलब क्या होगा? 2n factorial by n factorial n factorial. So I can write 2n, 2n minus 1, 2n minus 2 up to n plus 1 by factorial. Right. This n is n minus 1, n minus 2 up to 3, 2, 1. And cancel out. So what you are getting from this? It would be 2 multiplied by 2n minus 1 factorial by n minus 1 factorial. फायदा क्या होगा? यहां से मैं क्या वर्किंग क्या कर सकता हूँ? देखो, स्टार्ट करता हूँ इसको बेसिक से. सर हम लोग n minus 1 factorial को निकालेंगे तो कुछ n का आ जाएगा, उसमें n का डिविजिबिलिटी हो जाएगा. काफी सारी चीजें आएंगी, बट उसको थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ आपको एक अच्छे से तरीके दिखाने का. पहले हम लोग पहुंचते हैं वहां तक, राइट?
how you will get this 2n Cn? First, just we are thinking on this, how we are getting 2n Cn. What is the meaning of this 2n Cn? So if I'm saying if this is nothing but summation of NCR into NC n minus R is equal to 0 to 1. Is this okay? ये स्टेटमेंट क्लियर है या इसको मेरे को प्रूफ करना है? I prove this or this is okay? प्रूफ कर लें? ओके सर। प्रूफ कर लें? ठीक. See, what I'm saying we have 1, 2, 3 up to 10 articles in this, and second 1, 2, 3 up to 10 articles. Total number of articles are 20. This is from A and this is from B. What I'm saying is we have to select 10 article from all this, right? How many ways we can select? I'm saying one of the ways I can take 10C0, 10C10 plus 10C1, 10C2, 10C9 plus 10C2, 10C8 up to 10C10, 10C9. Is this okay? Or I can say if I'm taking this complete as 1, right? This complete as 1, so I can say this will be 20C10. If we'll see this, right? So this is nothing but 10CR into 10CN minus R, 10 minus R का summation from R is equal to 0 to 1. यहाँ तक में कोई दिक्कत या doubt, if you want to ask anything on this? Okay. अब ये स्टेटमेंट के बाद में व्हाट आई एम सेइंग कि यहां से एक बार ट्राई करने की कोशिश करो, शायद कुछ पकड़ में आ जाए. टेक योर टाइम. बहुत प्यारा सा चीज आया ये. ठीक है, मैं आगे दिखाता हूँ. सो मेरे पास जो हमने यहाँ पर नंबर आपको दिखाया था 2NCN, ये आया क्या? NC0 स्क्वायर, NC1 स्क्वायर, NC2 स्क्वायर अप टू NCN स्क्वायर. ये आ रहा है. क्या ये स्टेटमेंट अब क्लियर है? हाँ सर। राइट. व्हाट आई एम सेइंग कि इसके बाद आपका वर्किंग पी स्क्वायर वाला जो है वो प्रूफ हो जाना चाहिए. पहले इसको ट्राई कर लें, पी स्क्वायर पे कर लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं.
नहीं सी द अरेंजमेंट सर मिल गया सर। उसमें 1 + n² + n × n+1 का होल स्क्वायर, फिर n × n-1, सही, एक मिनट। हाँ, n × n-1 का स्क्वायर, फिर n × n-1 × n-2 का स्क्वायर। फिर ऐसे अगर ऐड होते जाएगा तो सब में हम लोग n-2 कॉमन ले सकते हैं, ऐसा n² कॉमन ले सकते हैं। नहीं समझा मैं। इससे एन क्यों कॉमन आएगा, एन सी नॉट स्क्वायर से? हाँ, वो nc0 प्रॉब्लम हो जाएगा। nc1 से लेके nc n-1 तक तो हो जाएगा वो। वेरी गुड। और करीब करीब आप आंसर तक पहुंच चुके हो। टेक योर टाइम। हाँ, तो उसमें माइनस मिल गया, मिल गया। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। करीब करीब ट्रैक हो चुका है। ऑलमोस्ट यू आर देयर, ऑलमोस्ट। मैं आगे बढ़ाऊं? सी, अरे पकड़ चुके थे बात, लास्ट था आपके लिए। सी दिस नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन सी नॉट? 1 1, वेरी गुड। प्लस एन सी n² प्लस एन nc1² is n²। एन सी एन माइनस वन स्क्वायर प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन सी एन? 1 1, very good. So this 1 + 1 is 2. 2 Can I write this 2ncn minus 2 is equal to nc1 square, nc2 square up to ncn minus 1 square, right? If we'll see this is okay, right? मेरे को यही चाहिए था, this will be divisible by, right? So this is 2ncn minus 2 is equals to nc1 square, nc2 square. If you see the number nc1 square plus nc2 square up to ncn minus 1 square. If you'll see nc1, can I write this as n by 1? yes sir। Right? And this will be n minus 1 c naught. That value will be, right? What is this nc2? This is n by 2, right? And this is n minus 1 c1, and so on. If you'll see from each number, this n will be common out. And it is given in our question, it is given that p is the prime one. So none of this n will be divisible by any of the number. Means everywhere you can take p as a common, right? The n as a common. So from each number, we can take this n common. So this is 2ncn minus 2 is equals to n square into some number n, right? So 100% this is a factor of n square. So this will be divisible by n square. सो इसमें से n³ कैसे निकालेंगे? n हाँ क्यूब सर। कहानी आएगी अभी, थोड़ी आगे तक जाने पर, बट पहले तो n स्क्वायर तक या उसके बाद क्वाड्रेटिक रेसिड्यू जो हम लोग करने वाले हैं उसका हेल्प लेना पड़ेगा। फ्रॉम दैट वी विल गेट दिस नंबर, राइट?
उसमें रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर्स जो होते हैं उसको यूज करना पड़ेगा। दिस इज द थ्योरम, राइट। आएगा अभी उसका भी नंबर, राइट। पहले सर क्वाड्रेटिक रेसिड्यू को छोड़ के कुछ लगा सकते हैं। होता क्या है ना, इसमें जो हमारे पास आएगा, जो सॉल्व करने पर आता है, वो आता है 1/1² + 1/2² अप टू 1/p-1 आता है, राइट। अब उससे मुझे दिखाना पड़ेगा कि वो नंबर डिविजिबल बाई पी है। व्हाट आई एम सेइंग ना, आपके पास जो आएगा, जो हमने सॉल्व करने के बाद में पूरा वर्किंग p² से डिवाइड करने के बाद जो नंबर आपको बच रहे होंगे, राइट, जो कैपिटल N यहाँ पर लिखा हूँ, वो आएगा समेशन ऑफ 1/r²। r इज इक्वल टू 1 to p-1। इसे मुझे दिखाना पड़ेगा कि ये वाला समेशन डिविजिबल बाई p। उसके लिए मेरे को मतलब रेसिप्रोकल ऑफ r² लेना एंड ऑल दिस थिंग, तो थोड़ा सा उसकी वर्किंग अलग हो जाती है। बट p² तक के लिए या n² तक के लिए यू मस्ट बी देयर कि p या n² से डिविजिबल होगा। तो अगर आप एक्सकर्शन करोगे ना, तो एक्सकर्शन में यही क्वेश्चन को उसने 3 स्टेप पे दिया। पहले उसने दिया डिविजिबल बाई p, उसके बाद दिया उसने उससे पहले भी, सॉरी, उसने एक और ये किया। तो सबसे पहला उसने जो दिया था क्वेश्चन इस पे, राइट, दैट वाज 2p-CP इज इवन और ऑड। पहले यहां से स्टार्ट किया, फिर बोला दिस इज डिविजिबल बाय p, फिर दिस इज डिविजिबल बाय p²। देन pq वाले को उसने थोड़ा सा साइड ही कर दिया, नहीं रखा, बट हम लोग वहां तक पहुंचेंगे। इवन है कैसे प्रूव करोगे आप? सर के बाद में हम लोग को मिल जाएगा 2 × 2p-1 into 2p1c 2p-1c and p-1, so that means we already have 2 but अगर ये बोलूं, इसको भी थोड़ा सा शॉर्ट करूं, 2n n इज नॉट प्राइम, n इज एनी नंबर, दिस इज इवन और ऑड, और मतलब वी कांट से। स्टेटमेंट क्या होना चाहिए यहाँ पे? sir we would get it सर n अगर plus n 1 मैचिंग n नंबर plus है 1 तो into n इवन plus होना 2। चाहिए। या सर n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 हो जाएगा, तो हर बार तो एटलीस्ट इवन तो आ जाएंगे थोड़े थोड़े। थोड़ा सा उसको थोड़ा इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो, थोड़े थोड़े इवन आ जाएंगे। सर मतलब अगर n+1 ऑड है तो n+2 इवन हो जाएगा, n+3 ऑड है तो n+4 इवन हो जाएगा। तो अगर आप लोग n+1 को इवन लेंगे, n+2 ऑड है, n+3 इवन है, n+4 ऑड हो जाएगा वैसे। अगर बहुत छोटा नंबर आ दे उसमें कैसे बोलूंगा? सर हम्म, सर वी कैन से कि 2n में जो है 2 का जो पावर आएगा वो n प्लस 2n को 2 से डिवाइड करेंगे और उसका जिफ लेंगे, तो 2 पावर 1 का फैक्टर n हो जाएगा, और प्लस जो है जो हमारा ओरिजिनल n है उसके 2 का पावर, तो वो जो है n इंटू n के पावर से ज्यादा होना चाहिए। नॉट बैड। क्या पता, इतना हेवी हेवी चीजें लगाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, जितना हो सके हम सिंपल पर काम बना सके। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 2n/n इंटू 2n-1 cn-1, n कैंसल, दिस इज 2 इंटू 2n-1 cn-1, दैट्स इट। नहीं, सर सिंपल हो गया ये तो। तो ये वाली क्वेश्चन जो है, इस पे अभी मैंने जैसे बोला है, लाइक वी हैव टू गो फर्दर ऑन दिस, राइट। बट यहां तक आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, राइट। ओके, सी द नेक्स्ट वन ऑन दिस, राइट। मैं इसके क्वाड्रेटिक रेसिड्यू के साथ में विल कम ऑन दिस। नेक्स्ट ऑन दिस, फाइंड वन पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ए बी, फाइंड of positive integer a b such that
first AB into A plus B is not divisible by 7. ये एकदम आरएमओ स्टाइल का क्वेश्चन, परफेक्टली जो बोलता है ना, जो आरएमओ का स्टाइल होता है क्वेश्चन लेने का, एकदम परफेक्ट. एंड ए सब उसका एक पेयर निकालना है, उसका जनरल सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन निकाल दो तो भी चलेगा, एक पेयर निकल जाए पहले ना. शुरुआत वही आरएमओ का स्टाइल ही वही रहता है, पहले हम लोग एक सॉल्यूशन पर जाए, वहां से फिर धीरे धीरे हम जनरलाइजेशन की तरफ. हाँ, तो पहले कोशिश रहेगी भाई कहीं दिखाई तो दे क्या हो रहा है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाएंगे. बाई 7 क्यूब. That's a very good question, very renowned question, right? Please. अब जनरलाइजेशन क्या पॉसिबल हो सकता है, क्या क्या नंबर्स पॉसिबल हैं? ये फी फंक्शन जो आपने किया है उस पर उसका कमाल है थोड़ा, राइट? तो टेक योर टाइम. यूज होता है नंबर्स का, वो बड़ा अच्छा यूज होता है. बहुत सारे और भी तरीके हो सकते हैं प्रूविंग के, बट कितने प्यार से हम लोग कर सकते हैं वो दिखाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन केवल पिक किया. सेवन क्यूब अगर मैं टिप्स देता हूँ ना, वो 7 क्यूब से डिविजिबल होगा, एक बार चेक करो तो आ रहा है क्या? 2 + 3 5, वो ना नहीं है. 6 10 10 + 9 19, नहीं नहीं आ रहा. डिविजिबल बाई 7 क्यूब, 7⁻³ शुड आई स्टार्ट? मैं स्टार्ट करूं क्या, या ओके? सो आई थिंक उसका कुछ जनरल सॉल्यूशन नहीं होगा, स्पेसिफिक ही होगा सेकंड के लिए. अगर ऑयलर टूटी फंक्शन लग रहा है तो 100% वो जनरलाइजेशन पर तो चला ही जाएगा. नहीं, अगर ए टू हाँ दी सर. हाँ ए टू दी पावर पी के लिए, मैं ए टू दी पावर p-1 के लिए मैं कॉन्ग्रुएंट 1 कर दे रहा हूँ, तो जनरलाइज हो ही जाएगा. बट फर्स्ट जो नंबर निकालना ना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है. हाउ टू गेट दैट नंबर.
छोटा सा मैं हिंट करूं, थोड़ा सा मेहनत का काम पहला करें, इसे सिंप्लीफाइड करें, जो हमारे पास गिवन है इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें, और सिंप्लीफाई करके एक बार वर्किंग देखें क्या पॉसिबल होता है। सर दूसरे इक्वेशन के लिए 1 mod 7 है, 0 mod नहीं 1 mod 7 है। दूसरे इक्वेशन के लिए जो हम लोग का है a+b⁻7, वो a mod 7 हो, a+b mod 7 होगा, a⁻7 a mod 7 होगा, और b⁻7 b mod 7 होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट। सो इसीलिए उसका 0 mod 7 होगा, लेकिन 343 कन्वर्जन के लिए नहीं नहीं नहीं, एक बार ओपन तो करो, देखो तो क्या आ रहा है। नॉट नेसेसरी वही पहुंचेगा, ओपन तो करो। हाँ सर, a+b n⁻, हाँ a+b शायद प्राइम भी नहीं हो सकता। तो इसे ओपन करने से जो सारे कोफिशिएंट्स हैं मल्टीपल ऑफ 7 है। एक तो 7 वहां से निकल ही गया, वेरी हाँ गुड। सर, 0 हाँ, mod 7 7 हो 21 जाएगा। 35 35 21 7। हाँ, नहीं 28 भी होगा ना। नहीं नेवर माइंड, 28 नहीं। ए बी 7 से डिविजिबल नहीं है, बट यूज फर्स्ट कंडीशन को देखो, बोल रहा है ए इंटू बी, a+b इज नॉट डिविजिबल बाई 7, मतलब वो सब तो दोनों केसेस सेटिस्फाई करना है। दोनों जाएगा ना। मैं करूँ 2 मिनट और। हाँ सर, 2 मिनट। ये सबसे पहले तो मेरे को सबसे बड़ा काम यही है, ये फैक्टर करने पर व्हाट यू आर गेटिंग। यहाँ पर से ये 3 फैक्टर यहाँ पर थे, a इज इक्वल टू, अगर मैं 0 रखूं तो दिस इज डिविजिबल, सर मिल गया एक। 2 and 4। हाँ सर, सर ब्रूट फोर्स लगाना पड़ा 6⁻7 और 2⁻7 4⁻7 के लिए, बट 2 and 4 यहाँ से आएगा 6⁻7। -2⁻7 -4⁻7। ये क्या आ रहा है? सर 6⁻7 हो जाएगा 279936। नहीं, इतना थोड़ी निकाल, -1 का पावर 7 आ गया, ये 2³ इंटू 2⁻4 -2 और 14
टू स्क्वायर आ गया, जीरो से नहीं आ रहा है ये। वन आ गया, ये टू आ गया, तो फिर माइनस से 1 आता है। -1 आ गया, एंड दिस इज 2 6 7 सर वो जो एक्सपेंशन अगर हम करेंगे उस हाँ सर, या equation फिर मॉड को, 343 हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो उसे हम मैंने लोग ग्रुप कर सकते हैं मैंने टोटल। ब्रूट फोर्स यूज किया, लेकिन वो यूज कर सकते। एक्सपेंशन पे क्या आ रहा है मेरे पास? व्हाट यू आर गेटिंग इन एक्सपेंशन? सर उसमें हो जाएगा 7 × 8⁻6b + 21 8⁵ बायनॉमियल एक्सपेंशन। इतना तो ये 7 ab a + b आ रहा है, इसके बाद का टर्म क्या आ रहा है? इतने तो टर्म आएंगे ही, क्योंकि a पर 0 रखने पर 0 है, b 0 रखने पर 0 है, एंड a + b मतलब a = -b रखने पर भी 0 आ रहा है, तो इतने फैक्टर तो मेरे पास है ही है, राइट? फिर ग्रुपिंग करना है। एंड एक फैक्टर शायद ये भी आ रहा है, b², ये भी एक फैक्टर आ रहा है, क्योंकि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर रखने पर भी ये 0 आ रहा है, नहीं? तो इतने फैक्टर तो मेरे को दिख रहे हैं कि इतने फैक्टर हैं। अब ये 0 नहीं होना चाहिए, आई डोंट नो, एक और फैक्टर कुछ आ रहा होगा, ये वो डिवाइड करके मेरे को मिल जाएगा वैसे अब, राइट? तो a² + ab + b² जो है, यही 0 होना चाहिए मॉड 7 के, मतलब 7³ के लिए। इनफैक्ट एक 7 आ चुका है, 7² भी हो जाए तो मेरा काम बन जाए, राइट? एक 7 तो मेरे पास आ ही चुका, तो यहाँ पर 7² भी हो जाता तो मेरा काम तो बन जाना चाहिए। ये क्लियर है ये स्टेटमेंट? इज दिस ओके? यस सर। इनफैक्ट एक बार चेक करके देखो, शायद यही 7² आ रहा होगा, तो केवल मेरे को यही प्रूव करना होगा, ये 7 से डिविजिबल होना चाहिए। वाह, वाह, गुड वन, वेरी गुड क्वेश्चन। अब 7 मेरे पास एक फैक्टर पहले था, एंड दिस, क्योंकि मेरे को सेटिस्फाई तो कर ही रहा है, रिपीटेड रूट्स अगर मेरे पास है, तो a² + ab, केवल ये मैं डिविजिबल बाई 7 कर दिया, तो ये 7² यहाँ फर्स्ट जो हमारे पास 7 से डिविजिबल है, एक नंबर यहाँ मेरे पास आ गया है, और ये अगर 7 से डिविजिबल है तो 100% 7² आ जाएगा, तो 7³ से डिविजिबल है, तो मेरे को केवल इतना प्रूव करना हो गया कि दिस नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 7। एंड ये जो फैक्टर है, अगर a ≠ b है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ a³ कॉन्ग्रुएंस टू b³ mod 7 होना चाहिए, राइट? p ऑफ 7 मेरे पास क्या आ जाएगा, 6, राइट? मतलब a³ का पावर 6 जो है कॉन्ग्रुएंस टू 1 mod 7 होना चाहिए। ये आ गया क्या, a⁻18 कॉन्ग्रुएंस टू 1 mod 7। आर यू गेटिंग दिस? अब b को अगर मैं 1 रख दिया, तो a को लोएस्ट वैल्यू मैं यहां से तो बोल ही सकता, और भी बहुत सारे नंबर होंगे, बट 2⁻18 के लिए तो ये ट्रू होगा ही होगा। जो एक नंबर आपको निकालना था वो यहां से आराम से दिख रहा है, अगर मैं 1 लेते हुए काम कर रहा हूं तो a मेरे पास आ गया 2⁻18, राइट, और b मेरे पास आ गया 1। ये तो एक परफेक्ट नंबर है जो आपके लिए वर्क कर रहा है। मैंने ये पूरा
ऑयलर प्रोटीन फंक्शन लगा के आपको वर्किंग एक दिखाया कि कैसे वर्क कर सकते थे आप। ब्रूट फोर्स थोड़ा सा मतलब जस्टिफाइड नहीं हो जा रहा नहीं। यहाँ पर हर एक चीज आपके पास ऐसा है जो वर्केबल है, लग रहा है कि हाँ मतलब डुएबल था, हो सकता है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोगों को थोड़ा अपने आप में हम लोग को एक जेन्युइनली हम लोग को एक मेहनत थोड़ी सी लगानी होगी जिससे हम लोग वर्क कर पाए, क्योंकि आरएमओ लेवल पर अगर मैक्सिमम टाइम आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आने के चांस हमेशा बने रहते। ओके, क्या ये सही है? यस सर। राइट, कर्स Yes, sir. पत्यूस ठीक है? अरे यस सर। अभी तो कैसे निकाला ये ब्रूट फोर्स बेटा? सर ट्रायल एरर करके लाइक डायरेक्टली लाइक 0 1 2 3 4 5 6 में से जो सम आ रहा है उसमें से लाइक कुछ कर लिया ट्रायल एरर से। वेरी गुड, वेरी गुड। सी तो इसके वर्किंग जो होते हैं, थोड़ा सा एक वर्किंग को मैं दिखाना चाहूंगा। अगर मैं कहूं कि एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस टू 9 mod 30, राइट। अब एक्स स्क्वायर मैंने कहा कि कॉन्ग्रुएंस टू 9 mod 13 आपके पास दिया हुआ है, तो एक्स की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है जो पॉसिबल, राइट? कि एक्स सर एक तो हो गया, दो हो गए, माइनस प्लस माइनस 3। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एक पहला तो थॉट प्रोसेस होगी कि अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर दिया हुआ है या एक्स की वैल्यूज के लिए है, तो यहाँ पर वर्किंग हमारे लिए थोड़ा सा एक आसान तो हो ही जाएगा, राइट। इसमें मैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के लिए अगर वर्क कर रहा हूँ ना, तो 100% ये बोल सकता हूँ कि एक्स कॉन्ग्रुएंस टू इधर 3 होगा या एक्स कॉन्ग्रुएंस टू -3 होगा mod 13 के लिए एंड mod 13 के सर मैं फैक्टराइजेशन ही बोलने वाला था। लिए। हाँ, सर क्या? मैं फैक्टराइजेशन ही बोलने वाला था। लेकिन ये परफेक्ट तब के लिए हुआ व्हेन वी नो दैट कि हमारे पास जो भी गिवन है, राइट, वो गिवन हमारे पास जो आ रहा है वो प्लस माइनस दोनों नंबर्स हमारे साथ में वर्क कर रहे हैं, राइट। दोनों हमारे नंबर साथ में वर्क कर रहे हैं एंड वी नो दैट कि ये हमारे पास सीधा का सीधा वर्क कर गया एंड नंबर हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 9 के लिए प्लस माइनस इज द नंबर, राइट। बट ये ऑलवेज हमारे लिए ट्रू नहीं हो सकता, राइट। तो ऑलवेज ट्रू नहीं हो सकता यहाँ के लिए। मैं ऑब्वियसली तो यहाँ नंबर्स तो आपके पास आ ही गए जो भी नंबर आ रहे हैं, राइट। 3 के लिए तो ये हमारे पास जाएगा 13, तो 3 3 16 29 42 55 एक्सेट्रा एंड 26 प्लस 3 29 एंड सो ऑन, राइट। इसके लिए जो नंबर जा रहा है दैट इज राइट 10 23 10, 36 23, 49। राइट एंड सो ऑन, राइट। तो दोनों नंबर्स हमारे पास अरेंजमेंट में आ गए, राइट। वर्क हो सकता है यहाँ। अब इसमें एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है कि क्वाड्रेटिक रेसिड्यू क्या होगा। क्वाड्रेटिक रेसिड्यू क्या होगा मतलब हम जो ये यहाँ पर से एक्स की वैल्यूज निकाली, बट इसी में एक ये लर्निंग हमारे लिए जरूरी होता है, क्या ये ऑलवेज सॉल्यूशन पॉसिबल है या कभी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं भी होगा। तो ये डिपेंड करता है इस बात पर कि क्या इसके क्वाड्रेटिक रेसिड्यू, इसके क्वाड्रेटिक रेसिड्यू का मतलब होता है कौन कौन से नंबर इसके लिए पॉसिबल हो रहे हैं। जैसे मैंने एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस टू ए लिया mod 13 के, तो अगर मैं 13 की ही बात कर रहा हूं तो कौन कौन से नंबर हैं जो हमारे लिए पॉसिबल होंगे। अगर मैं 1 या 12 की बात कर रहा हूं तो दोनों समय मेरे को 1 ही मिलेगा, राइट। 2 या 11 की बात कर रहा हूं तो 4 मिलेगा। 3 या 10 की बात कर रहा हूं, राइट, 3 या 10 की बात कर रहा हूं तो इन समय मेरे को 9 मिलेगा, राइट। 4 या 9 की बात करूं तो 16 3 मिलेगा, राइट। 5
या 8 की बात करूं तब 5 या 8 की बात करूं तो -1 या 12 मिलेगा। 5 के बाद 6 या 7 की बात करूं तो उस समय मेरे पास 10 मिलेगा। तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो नंबर्स हैं 1, 3, 4, 9, 10, 12, ये जो नंबर्स हैं अगर इसके फॉर्म में मेरे को आंसर्स मिल रहा है तब तो मैं बोलूंगा कि हाँ, अगर ये नंबर्स हैं तो दीज आर कॉल्ड द क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ 13। 13 से हम स्क्वायर नंबर पर व्हाट वी आर गेटिंग। इसी में दूसरी टर्मिनोलॉजी होती है नॉन रेसिड्यू, राइट। नॉन रेसिड्यू को ऑब्वियसली मतलब समझ ही गए होंगे क्या होगा ना। कौन कौन से नंबर हैं 2, 5, 6, 7, 8, 11। मतलब अब इनके इक्वल में मैं ए की वैल्यूज 2, 5, 6, 7, 8, 11 इनमें से कोई नंबर्स रखते जा रहा हूं तो आपको सॉल्यूशन मिलने ही नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? तो सबसे पहली बात तो हमारे पास यही रह गई कि क्या वो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू में आ रहे हैं या क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू में आ रहे हैं। क्वाड्रेटिक रेसिड्यू अगर मेरे पास है तो 100% वी आर गेटिंग द सॉल्यूशन, और अगर क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मेरे पास नहीं आ रहे हैं तो सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। इज दिस ओके? जल्दी से नोट करो तो मैं एक दो बेसिक क्वेश्चंस इसके पहले हम लोग करके थोड़ा कंफर्टेबल हूं। मैंने लिंक वेरी गुड, And वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। That you'll get that this having no solution, then you have to prove or something. Okay. So first we have to see like what is the quadratic residue of mod 17, right? So it's 1 square or 16 square that will give you 1. 2 square, 15 square will give you 4. 3 square, 9, and 14 square. 4 square or 13 square congruence to 16. 5 square or 12 square, 25. That's 8. 6 square or 11 square. What is that?
36, that's 2 only. 7 square or 10 square, 15. 15 minus 2, 8 square, 9 square. What you are getting? -4. Minus 5 or 12? -4 no. -4, right? So none of the number is coming as 5. So this is, you understand the meaning of this, right? Like no solution for this value, right? X square congruence to 23 mod 419 is solvable or not? Is the number 419? चलो मैं छोटा कर देता हूँ फर्स्ट राउंड के लिए। 419 थोड़ा बड़ा आपके लिए शायद हो जाए। मैं इस नंबर को कर दिया 55। Why आर्यन? सर बिकॉज जितना भी टाइम हम लोग 55 ऐड कर लेंगे उसके साथ 8 नहीं तो 3 आ रहा है, तो नन ऑफ 8 और 3 आर स्क्वायर्स, राइट? 5 और 0, अगर 55 का इधर हम लोग का 5 और 0 लास्ट डिजिट हो सकता है, तो अगर 23 होगा तो लास्ट डिजिट 3 और 8 होगा, विच इज नेवर पॉसिबल इन अ परफेक्ट स्क्वायर। 1 भी हो सकता है ना? हाँ? नहीं, 1 1 क्यों होगा? 55 is 5 and 0, right? Then 3 and 8 it would be 55 plus 46. 55 plus 46. How come it's 46? Because of 23 mod 55. वेरी गुड, गुड ऑब्जर्वेशन। वर्क करके देखें। Done everyone? Very good. ये क्वेश्चन मार्क, ये काव्यम काव्यम, आर यू देयर? यस सर। सर हाँ, लास्ट डिजिट 8 और 3 होगा तो नहीं होगा पॉसिबल। ठीक है ना? This number is nothing but x square is equal to 55n plus 23. Right. So every time you are getting very good observation, right? But अगर मैं solution पर ले जाऊं, then like x square congruence to 26 mod 55. Now the question is there. Take your time. आप सबके पास 2 to 3 minute time you have. A beautiful question, right? Yeah, this is the question when you'll get सर पिछले वाले को फिर से समझा सकते हो? a square of like 55, and if I'm writing right, so every time when you are taking either odd number or even number, so if you are taking even number, so it will end it with 3, right? 55 into 2 will be, right? Or if odd number, it will be ended with 8, right? None of the square of the number will be ended with 3 or 8 or 2. Sir, Also. I've said
this one. सर अगर 55 ऐड करेंगे तो 81 हो जाएगा, तो फिर x इज इक्वल टू 9 mod 55, नहीं तो -9 mod 55, तो देन 964 119 जाएगा पूरा, या फिर 46 101 और भी 150। सॉल्यूशन होंगे, और भी सॉल्यूशन होंगे, कि बिकॉज 55 इज नॉट अ प्राइम नंबर, हाँ वो भी। तो सॉल्यूशन हो सकता है उसके अंडर पे ही सॉल्यूशन आ रहे हैं, राइट। तो बहुत सारे सॉल्यूशन इसमें छूट जाएंगे, अंडरस्टैंड। वो वाले सॉल्यूशन तो है, आई एम नॉट सेइंग कि लाइक ऑल द नंबर्स आर नॉट सॉल्यूशन, you know, good, but you'll get more solution. You are going with 55, but 55 will be multiple of 5 and 11, right? So more solution are possible on this. So may I start this? May I start this? See. So what I'm saying ki x square congruence to 26 mod 5, and other time I'm taking x square congruence to 26 mod 11, right? For 25, I can write x square congruence to 5. If I'm dividing this by 5, I'm getting 1, right? And for this, x square is congruence to 4 mod 11, right? From this, what I'm getting, x congruence to 1 or x congruence to -1 mod 5, and x congruence to 2 mod 11, and x congruence to -2 mod 11. Is this okay? Now we have to work on this. ये पूरे पे मेरे को काम करना, कैसे कैसे काम करना है। मेरे पास एक आ गया दिस, सेकंड इज दिस, मतलब ये दोनों को मैं एक साथ ले रहा हूं, थर्ड विल बी दिस एंड फोर्थ विल बी दिस। चार पॉसिबिलिटी, चार तरह से मेरे को वर्किंग करने हैं, मतलब मेरे पास चार क्वेश्चन है यहाँ पर। क्या क्या क्वेश्चन है? x congruence to 1 mod 5 and x congruence to 2 mod 11, right? So what we can write from this? X is equals to 5n plus 1, right? And that I have to apply on this, right? और मैं यहां से लिख सकता था x is equal to 11t plus 2, and now I have to apply this on this, right? So what are the possible 101. numbers from this when you are taking 1 and 2 Chinese, or you can apply the CRT, right? You can write this is coming as 1 plus 5n, right? So I can write this as, this x is 1 plus 5n, so I can write 5n plus 1 congruence to 2 mod 11. Now the simplest way, right? Simplest way to solve this, मैं पूरा Chinese CRT नहीं करके मैं थोड़ा सा reducible form में कर दे रहा हूँ जिसमें आसान पड़े, right? So 5n plus 1 congruence to 2 mod 11, so 5n congruence to 1 mod 11 multiplying and 20. congruence to 2 mod 11, or this minus x congruence to 2, or x congruence to -2 mod 11, or x congruence to 9 mod 11. Is this okay? The simplest way to solve this, right? But this is the So first n होगा ना? अच्छा, Huh? n. 1 9 ना? So n is congruent to 9 होगा ना? n is congruence to 9 mod 11, right? और वो 5 वाले कंडीशन से ही मैंने दिया हुआ था, right? So this is the answer you are getting. Means first number you can say what will be the number on this case. 20. फिर x हो जाएगा 101. Is this okay? Yes sir. Right?
Then second, we will find from x1 and x minus 2. Third, you will find from x minus 1 and x2. Then fourth, you will find from x minus 1 and x minus 2. Are you getting this? Perfectly, na? ये काफी useful है, right? So please, carefully, right? We have to work on this. Okay? Right? So ये quadratic residue जो हम लोगों ने किया है, इसके use ना मतलब करवाने का रीजन समझ ही गए होंगे, क्योंकि मैंने जो ये क्वेश्चन दिया था इस पर वर्क करना है। तो एक बार इसके क्वेश्चंस भेज दे रहा हूँ, आप लोग गो थ्रू करो, देन राइट नेक्स्ट लेक्चर में विल डू दिस इन अ डिफरेंट वे। दिस वन, ये कुछ लोग शायद नहीं होंगे, तो मैं एक बार जल्दी से लेक्चर आपको दिखा दूं क्या हम लोगों ने किया था आज। तो फर्स्ट आई हैव स्टार्टेड विद व्हाट वी हैव डन अर्लियर, राइट, जो हम लोगों ने पहले किया था। पहले हम लोगों ने जो किया था वो था Euler totient function was there, right? तो उस पे क्वेश्चन मैंने दिए कि first find values of n such that this and this, and secondly go for this, right? Then 3 to the power 56 mod 7, right? The revision of only this thing. Then this was a very good question. A to the power 13 congruence to a mod 2730. So this 2730 was the factor of 3 into 5 into 7 into 13, right? So one by one, we have found all this divided by the phi function of this and taken the numbers and using the CRT again here, right? Then the Wilson theorem, right? The Wilson theorem made this is a very famous question. P cube divides 2pCp minus 2. I have given 3 questions on this. First, you have to prove this is divisible by p or p square, then p cube. So till this lecture, we have done this is divisible by p square. We have not done for p cube, because for that we have to study something more, right? So for the quadratic residue, we are going for that, right? So this p and p square से divisible के लिए we have done the things, and उसके लिए working हमारी थोड़ी सी अधिक रही, right? We have to use PNC on this, right? I'll share this also, right? Then we have gone through one question, this RMO like just RMO type question on this. This is again a good one, right? Then the quadratic residue all be present on this, and we were working that, right? And this was the question that I was talking about. So how to use this CRT is okay now, everyone? How to use this CRT? Not go the formula every time. You can use the CRT. Ki X you are getting 5n plus 1, right? Then this 5n plus 1 will be, so n you are getting as 9, right? 9 mod 11. So 9 mod 11 means you are saying that this n is equal to 11t plus 9. Right, so you can put this n in this. So x is 5 into 11t plus 9 plus 1. So x is equal to 55t plus 46. Is this okay? So t is equal to 0, you are getting 46, t is equal to 101, and so on. Right, so this you can use this type of formation. Okay, everyone? Right, so give me 5 minutes again, I'll start the lecture, right? And the geometry part. Okay. Okay, sir. सर इस बार ज्योमेट्री में क्या होगा?